Hi, let's learn how to use fan brush in watercolor. This is a synthetic fan brush and we can use this fan brush for different purpose. लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप वाटर कलर सीखना चाहते हैं और आपके पास टाइम नहीं है कि आप बैठ के ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी से सीख सके तो आप मेरा वाटर कलर का प्री रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसका और डिस्क्रिप्शन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है या फिर आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी वाटर कलर कोर्स का मेरे वेबसाइट में जाकर वाटर कलर कोर्स ले सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं द यूज ऑफ फैन ब्रश। सो दिस इज माय फैन ब्रश। दिस इज अ सिंथेटिक फैन ब्रश। पहले हम फैन ब्रश में थोड़ा कलर ले लेते हैं। आई एम टेकिंग द ग्रीन कलर हियर और इससे हम देखते हैं कि इससे कैसा स्ट्रोक आता है। यहाँ पे मेरे ग्रीन कलर के साथ बाय मिस्टेकनली ब्लैक और थोड़ा रेड भी आ गया है, तो आप अब देख सकते हैं कि आप इस तरह के लाइंस इससे क्रिएट कर सकते हैं इफ यू टेक इट इन ए वर्टिकल way and taking and giving the strokes in horizontal way. But if you take the brush vertical in its 90-degree, then you can get these standing lines. Okay, or this way you can also get the sleeping lines. Okay, फैन ब्रश से हम sometime bushes create कर सकते हैं. If I take dark green color and not too much water, okay, थोड़ा पानी के साथ अगर हम लेते हैं तो, और अगर हम ऐसे टैपिंग करेंगे तो हम बहुत इजीली बुशेस क्रिएट कर सकते हैं जिसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा रहेगा. इफ यू टेक light color also in your brush and the dark color together, like I'm taking this dark color and I'm taking this yellow also, so you can see it's a kind of bushy effect is coming. Then if you want, you can make the pine tree also, first making the middle line, then only with the corner of the brush first take the color, you can make the leaves, or if you give horizontal lines then also you will get one another kind of layer of or the style of pine tree. Okay, now say I put some water here, then I'm taking the green color and just let it blend. Then you can give one strokes of little grasses here very easily with this brush. Okay, we can make waterfall or water waves also very easily with fan brush. First let's take the blue color. I took the blue color in my brush. Now if I put
the keep the brush like in a 60-degree angle, and if I keep the lines like this, so you can get kind of waterfall effect with this brush very easily. Okay, even hairs also we can do like this by using this brush. Again, in the same technique, we can make another kind of tree by using this brush. Now, if we want to make water waves, then we can take the brush like this, and we can give this kind of wavy effect to make the water wave. You have to take a brush and move it in a circular way. This way, if you do, you can get the wave effect in watercolor by using fan brush very easily. So this is all about a little information about the fan brush.